हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री की, और जैसा कि आप लोग जानते हैं यहाँ पर आज आपका लैब का सेशन है, तो उसमें हमने लास्ट सेशन में टेस्ट फॉर फंक्शनल ग्रुप देखा था, उसी को आज कंटिन्यू करते हैं कि किस किस फंक्शनल ग्रुप के टेस्ट के लिए आपको क्या क्या प्रैक्टिकल करना है, कैसे आप वो प्रोसीजर अपनाएंगे, उसी पर बात करेंगे। ऑब्जेक्टिव था आपका to identify the functional groups present in an organic compound through test for unsaturation, test for alcoholic group, test for phenolic group, test for aldehyde and ketonic groups, test for carboxylic group and test for amino group. Okay, तो सभी के लिए आपने अलग अलग टेस्ट लगाए थे। जैसे हमने पहले टेस्ट फॉर अनसेचुरेशन की बात की थी, तो अनसेचुरेशन के लिए पहला टेस्ट आपका ब्रोमीन टेस्ट है, जहां पर आप क्या कहते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर अनसेचुरेटेड है और उसमें आपने ब्रोमीन वाटर डाला तो वो क्या हो जाता है, कलरलेस हो जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि वो आपका कोई अनसेचुरेटेड कंपाउंड है। ओके, देन बेयर्स टेस्ट एक और था आपका, जिसमें आपने क्या कहा कि हम KMnO4 डालेंगे और KMnO4 भी अगर कलरलेस दिख रहा है, हो जाता है, तो यानी कि वहां पर भी आपका अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। यहीं पर अगर कलरलेस नहीं होता है, दैट मीन्स कि वो कैसा है, आपका सेचुरेटेड कोई कंपाउंड है। ओके, टेस्ट फॉर एल्कोहलिक ग्रुप। चलिए, टेस्ट फॉर एल्कोहलिक ग्रुप में अल्कोहल्स आर कंपाउंड्स इन विच द हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH is linked to aliphatic carbon chain or in the side chain of an organic compound. Depending upon the number of hydroxyl group, alcohols are classified as mono, di, tri. Okay, होता क्या है, अल्कोहल क्या होता है, किसी भी कार्बन चेन में आपका जब OH ग्रुप जुड़ा हुआ है तो उसका मतलब क्या है, वो कोई हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। और हाइड्रोक्सिल ग्रुप आपका कार्बन से जुड़ा हुआ है, यानी किसी हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोक्सिल ग्रुप के प्रेजेंट होने का मतलब वो अल्कोहल आपका कोई कंपाउंड है। ठीक है, इसमें नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप के अकॉर्डिंग आप इसको मोनो, डाई, ट्राई में बता सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं। मोनो का मतलब जिसमें एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा, डाई का मतलब होता है जिसमें दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होंगे, ट्राई का मतलब जिसमें तीन हाइड्रोक्सिल ग्रुप होंगे। ओके, अल्कोहल्स आर फर्दर क्लासिफाइड एज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अकॉर्डिंग टू दी OH group is attached to the primary, secondary and tertiary carbon atoms respectively. इनको आप प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी में भी क्लासिफाई कर सकते हैं। डिपेंड करता है आपका कि जिस कार्बन एटम से वो OH ग्रुप जुड़ा हुआ है वो कौन सा है, वो 1 डिग्री है, वो 2 डिग्री है, वो या वो 3 डिग्री है, यानी कि जो वो आपका प्राइमरी कार्बन है या सेकेंडरी कार्बन है या टर्शियरी कार्बन है। ओके, द अल्कोहलिक ग्रुप कैन बी डिटेक्टेड बाय द फॉलोइंग टेस्ट, सोडियम मेटल टेस्ट। तो सबसे पहले अल्कोहलिक ग्रुप के लिए आप सोडियम टेस्ट लगाएंगे, जिसमें आप उस कंपाउंड में सोडियम मिलाएंगे तो सोडियम एल्कोक्साइड आपका बनेगा। ओके, सो अल्कोहल्स react with active metals like sodium and liberate hydrogen gas that can be observed in the form of effervescence. Okay, ये आपने 10th क्लास में जब आप अल्कोहल का पढ़ रहे थे ना, इथेनॉल के बारे में पढ़ रहे थे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में, वहां पर भी रिएक्शन आती है कि आपको जो इथेनॉल है, अल्कोहल है आपका, उसके साथ जब सोडियम की अभिक्रिया कराते हैं तो हाइड्रोजन गैस वहां पर लिबरेट होती है। ठीक है ना, तो वही वाला ये आपका क्या है, मेथड है, प्रोसीजर है। दूसरा है एस्टर टेस्ट, ये भी आपने वहां पर पढ़ा था जब आप इथेनोइक एसिड पढ़ रहे थे, तो इथेनोइक एसिड की रिएक्शन अल्कोहल से कराने पर एस्टर फॉर्म हो रहा था। तो सेम यहाँ पर भी वो ही करेंगे आप लोग, अल्कोहल रिएक्ट विद कार्बोक्सिलिक एसिड टू फॉर्म फ्रूटी स्मेलिंग कंपाउंड कॉल्ड एस्टर। ठीक है, फ्रूटी स्मेलिंग कंपाउंड, ये एक अलग प्लीजेंट स्मेल आप इसे कहते हैं। वैसा स्मेलिंग कोई कंपाउंड फॉर्म होता है जब आपका अल्कोहल किसी कार्बोक्सिलिक एसिड से रिएक्ट कर रहा है, और उसको एस्टर कहा जाता है जो कंपाउंड आपका फॉर्म हो रहा है। द रिएक्शन बिटवीन अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड इज कॉल्ड एस्टरिफिकेशन एंड इज कैटलाइज्ड बाय एन एसिड सच एज कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। ओके, यहाँ पर ये अभिक्रिया किसी उत्प्रेरक की उपस्थिति में होती है, कोई एसिड होगा आपका जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड है जो कि कॉन्सेंट्रेटेड है। ओके, साथ में यहाँ पर वाटर भी फॉर्म हो रहा है। रिएक्शन आपकी मिथाइल अल्कोहल, एक अल्कोहल है आपका, उसकी रिएक्शन एसिटिक एसिड से करा दी, मिथाइल एसिटेट बन गया। तो ये आपको टेस्ट क्या करना है, आपको पता नहीं है ये अल्कोहल है, ठीक है, आप टेस्ट लगा रहे हो उसके लिए। अगर आपने कोई कंपाउंड दिया है, उसमें एसिटिक एसिड डाला है और एसिटिक एसिड डालने पर एक फ्रूटी स्मेलिंग कंपाउंड आपका बनता है, तो वो क्या होगा, एस्टर होगा। और क्योंकि आपने कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ किसी कंपाउंड की रिएक्शन कराई है तब एस्टर फॉर्म हुआ है, दैट मीन्स कि जिस कंपाउंड की आप बात कर रहे हैं वो आपका अल्कोहल होगा। ओके, नेक्स्ट है आपका सेरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट, जिसके लिए आप क्या करेंगे, अल्कोहल की रिएक्शन सेरिक अमोनियम नाइट्रेट से कराएंगे, जहां पर एक रेड कलर का कंपाउंड दैट इज एल्कोक्सी सीरियम फोर्थ कंपाउंड
आपका फॉर्म होगा। ओके, जैसे यहाँ पर मिथाइल अल्कोहल की रिएक्शन स्टेरिक अमोनियम नाइट्रेट से कराई गई, तो मिथॉक्सी सीरियम फोर्थ आपका बना है, पिंक और रेड कलर इसका आएगा, साथ में आपका क्या बन रहा है, NH4NO3 बन रहा है। ओके, नेक्स्ट है आपका एसिटाइल क्लोराइड टेस्ट। एसिटाइल क्लोराइड टेस्ट में अल्कोहल या उस कंपाउंड की रिएक्शन, जो कि अल्कोहल हो सकता है, उसकी रिएक्शन जब भी, यानी कि आप अल्कोहल का टेस्ट लगाएंगे, ये वाला टेस्ट लगा रहे हैं, तो कंपाउंड के साथ एसिटाइल क्लोराइड डालेंगे, एस्टर आपका फॉर्म हो रहा है, यही आपका क्या है वहां पर, और साथ में हाइड्रोजन क्लोराइड गैस उत्पन्न हो रही है, एसिटाइल क्लोराइड टेस्ट ये है। आइडोफॉर्म टेस्ट है आपका, दिस टेस्ट इज गिवन बाय एसिटाल्डिहाइड all methyl ketone and all alcohols containing CH3CHOH group when alcohol is warmed with sodium hydroxide solution and iodine, a yellow precipitate of iodoform is formed. Okay, क्या हो रहा है यहाँ पर, बोला क्या है, CH3CHOH ग्रुप जिसके पास भी है, CH3CHOH ग्रुप जिस भी अल्कोहल के पास है, उनके लिए ये टेस्ट लगाया जाएगा, जहां पर इसकी रिएक्शन किससे कराई जा रही है, आयोडीन से, साथ में NaOH लिया गया है, तो आपका कोई एसीटोन फॉर्म हो रहा है, और उसके बाद एसीटोन की रिएक्शन फर्दर कराई गई है, तो आपका आयोडोफॉर्म टेस्ट ये दे रहा है, यानी आयोडीन वहां पर जुड़ रहा है। ओके, तो ये टेस्ट भी हम लोग देखेंगे, इसके लिए प्रोसीजर देख लेंगे, अल्कोहलिक ग्रुप के लिए जो टेस्ट लगाने हैं उनका प्रोसीजर। ठीक है, ये है आपके सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करानी है, तो आप लोग क्या करेंगे, प्रोसीजर है, टेक अबाउट 1 ml ऑफ द गिवन लिक्विड इन अ ड्राई टेस्ट ट्यूब, लिक्विड होगा क्योंकि आपको पता है अल्कोहल लिक्विड्स में होते हैं, ड्राई टेस्ट ट्यूब में लिक्विड ले लेंगे, एड अबाउट 1 ग्राम ऑफ एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट डालेंगे उसमें, एंड शेक वेल टू रिमूव वाटर, अच्छे से उसको शेक करेंगे ताकि वाटर हट जाए, फिल्टर द लिक्विड इनटू अनदर क्लीन ड्राई टेस्ट ट्यूब एंड एड अ स्मॉल पीस ऑफ सोडियम मेटल। ओके, क्या करेंगे आप लोग, फिल्टर कर लेंगे लिक्विड को किसी दूसरी टेस्ट ट्यूब में, एंड उसके बाद उसमें सोडियम मेटल ऐड कर देंगे। ऑब्जर्वेशन में आपको क्या दिखेगा, देखने में क्या आपका मतलब प्रेक्षण क्या निकलेगा, ब्रिस्क एफर्वेसेंस इज प्रोड्यूस्ड। ओके, एंड इन्फरेंस में आप लोग क्या लिखेंगे, ये एफर्वेसेंस किसकी वजह से प्रोड्यूस हो रही है, सो ब्रिस्क एफर्वेसेंस इज ड्यू टू द एवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस इंडिकेटिंग द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक ग्रुप। ठीक है, इनका बनना, इन एफर्वेसेंस का बनना ये बताता है कि वहां पर कोई अल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट है। एस्टर टेस्ट क्या कहता है, टेक अबाउट 1 ml ऑफ द गिवन लिक्विड इन अ क्लीन ड्राई टेस्ट ट्यूब, जो भी आपको लिक्विड दिया गया है उसका 1 ml के बराबर आप एक ड्राई टेस्ट ट्यूब में ले लेंगे, एड अबाउट 1 ml ग्लेशियल एसिटिक एसिड उसमें डालेंगे, ग्लेशियल एसिटिक एसिड, 2-3 ड्रॉप्स ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, दो तीन ड्रॉप आप किसकी डालेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड की डालेंगे, वार्म द मिक्सचर ऑन अ वाटर बाथ, उस मिक्सचर को गर्म करेंगे वाटर बाथ में फॉर अबाउट 10 मिनट्स, 10 मिनट के लिए, pour it into about 20 ml of cold water taken in a beaker and smell। अब क्या करेंगे आप लोग, इसको पोर कर लेंगे 20 ml of cold water में किसी बीकर में, एंड स्मेल, अ फ्रूटी स्मेल इज प्रोड्यूस, फ्रूटी स्मेल आपको आएगी, जो कि क्या बताती है, प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक ग्रुप आपको बताती है। स्टेरिक अमोनियम नाइट्रेट के साथ आप क्या टेस्ट लगाएंगे, टेक अबाउट 1 ml ऑफ द गिवन लिक्विड इन अ क्लीन ड्राई टेस्ट ट्यूब। जब भी आपको फंक्शनल ग्रुप के टेस्ट लगाने हैं, आप टेस्ट ट्यूब का यूज वहीं पर लगाते हैं जहां पर आप आइडेंटिफिकेशन करते हैं या फंक्शनल ग्रुप के टेस्ट करते हैं। ठीक है, एंड एड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ स्टेरिक अमोनियम नाइट्रेट रिएजेंट एंड शेक इट वेल, यानी कि आपने लिक्विड लिया टेस्ट ट्यूब में, उसमें स्टेरिक अमोनियम नाइट्रेट डाला, उसको शेक किया अच्छे से, पिंक और रेड कलर इज ऑब्जर्व्ड, अगर आपका पिंक और रेड कलर आ रहा है दैट मींस प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक ग्रुप, ये क्या बता रहा है आपको कि अल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट है वहां पे। ओके, एसिटाइल क्लोराइड टेस्ट के साथ आप क्या करेंगे, टेक अबाउट 2 ml ऑफ द गिवन लिक्विड इन अ क्लीन ड्राई टेस्ट ट्यूब, सेम वही जो लिक्विड आपको दिया गया, देखो इसमें करना क्या है, आपको एक अननोन लिक्विड दे दिया है, आपको बताना है वो लिक्विड क्या होगा। पहले तो आपको पता है कि लिक्विड स्टेट में तो कौन कौन से आपके फंक्शनल ग्रुप इसमें हो सकते हैं, जो आपको फंक्शनल ग्रुप या जो कंपाउंड आपको पता है कि लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं, और कमरे के तापमान पर आपको पता है अल्कोहल भी पाया जाता है, तो आपने अल्कोहल का क्या लगाना है, यहाँ पर टेस्ट लगाना है। ठीक है ना, तो आपने ये सारे टेस्ट लगाए, आपने वो जो कंपाउंड है, लिक्विड है, वो टेस्ट ट्यूब में ले लिया, अब उसमें क्या किया, एड 1 ग्राम ऑफ एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट, उसमें कैल्शियम सल्फेट डाला, एंड शेक वेल इट टू रिमूव वाटर, वाटर को रिमूव करने के लिए उसको अच्छे से शेक करेंगे, फिल्टर द लिक्विड इनटू अनदर क्लीन ड्राई टेस्ट ट्यूब, फिल्टर करेंगे अगेन, एंड टू द फिल्ट्रेट, जो आपका फिल्ट्रेट आएगा, एड 2-3 ड्रॉप ऑफ एसिटाइल क्लोराइड, उसमें 2-3 ड्रॉप आप किसकी डालेंगे, एसिटाइल क्लोराइड की डालेंगे। Okay, then shake the test tube well and bring a glass rod dipped in ammonium hydroxide solution near the mouth of the test tube। अब आप क्या करेंगे,
एक ग्लास और को डिप करेंगे यहाँ पर अमोनियम हाइड्रोक्साइड के सोल्यूशन में और उसको टेस्ट ट्यूब के माउथ के पास ले जाएंगे। आपको क्या दिखता है? व्हाइट फ्यूम्स आर प्रोड्यूस। वो रॉड से आपकी व्हाइट फ्यूम बनना शुरू हो जाएंगी। ये भी बताता है कि प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक ग्रुप, यानी कि यहाँ पर एल्कोहलिक फंक्शन ग्रुप आपका प्रेजेंट हो सकता है। ओके, तो ये सारे टेस्ट आप नोट करेंगे, प्रोसीजर है ये एल्कोहलिक ग्रुप के लिए। फिर हम इसकी वीडियो देखते हैं कि किस प्रकार से ये प्रैक्टिकल आपको करना है। ओके, चलिए चलिए वीडियो आप लोग देखेंगे, एनिमेशन किस प्रकार से ये टेस्ट किए जा रहे हैं। Now add 2 to 3 drops of KMNO4 solution to it. Now add 2 to 3 drops of KMNO4 solution to it. Decolorization of pink color of KMNO4 indicates unsaturation. Now add 2 to 3 drops of KMNO4 solution to it. There's calcium sulfate in it. Pour it and pound into metal test. Decolorization of pink color of KMNO4 indicates unsaturation, otherwise it is saturation. अल्कोहलिक ग्रुप के लिए आप लोग यहाँ पर टेस्ट लगाएंगे। ओके, तो वो ये एनिमेशन वीडियो के थ्रू आप देखेंगे कैसे आपको प्रोसीजर को फॉलो करना है। ओके, Alcoholic group. Sodium metal test. Procedure. Take a clean and dry measuring jar. Pour 1 ml of the given unknown compound into it. Pour it into a dry test tube. Add a small amount of anhydrous calcium sulfate in it. Shake well. Place a funnel over a test tube. A filter paper is set into the funnel. Filter the solution into the test tube. Remove the funnel. Take small pieces of sodium metal using a forceps. Place it on the filter paper and dry it with another filter paper. Add 2 to 3 pieces of sodium metal into the test tube using a forceps. Alcohols react with active metals like sodium to produce effervescence due to the liberation of hydrogen gas. Ester test. Procedure. Take a measuring jar. Pour 1 ml of the unknown compound into the measuring jar. Transfer it into another dry test tube. Take another measuring jar. Pour 1 ml of glacial acetic acid into it. Pour it into the test tube. Take a dropper. Add 2 to 3 drops of concentrated sulfuric acid into the test tube. Warm the mixture in a water bath for 10 minutes. Add this mixture into 20 ml of cold water taken in a beaker and smell it. Alcohol reacts with carboxylic acid in the presence of concentrated sulfuric acid to form a fruity smelling compound called esters. A fruity smell indicates the presence of an alcoholic group. Steric ammonium nitrate test. Procedure. Take a measuring jar. Pour 1 ml of the given unknown compound into it. Pour it into a dry test tube. Add few drops of steric ammonium nitrate reagent into it. Shake well.
alcoholic compounds on reaction with ferric ammonium nitrate to give a red coloration due to the formation of alkoxy-cerium 4 complex. Acetyl chloride test. Procedure. Take a measuring jar. Pour 1 ml of the given unknown liquid into it. Pour it into a dry test tube. Add a small amount of anhydrous calcium sulfate into it. Shake well. Place a funnel over the test tube. Place a filter paper in the funnel. Filter the liquid in the test tube. Remove the funnel. Add 2 to 3 drops of acetyl chloride into it. Take a glass rod and dip it in ammonium hydroxide solution. Bring the glass rod near the mouth of the test tube. Alcohols on reaction with acetyl chloride form esters and give out hydrogen chloride gas. The hydrogen chloride gives white fumes of ammonium chloride with ammonium hydroxide. Iodoform test. Procedure. Take a measuring jar. Pour 1 ml of the given unknown liquid into it. Pour it into a dry test tube. Take 1 ml of 1% iodine solution in a measuring jar. Add it to the test tube. Add dilute sodium hydroxide solution dropwise until the brown color of iodine is discharged. Warm the mixture gently in a water bath. Formation of yellow precipitate of iodoform indicates the presence of alcoholic group. Lucas test. Procedure. ल्यूकस टेस्ट आपको बताएगा कि आपका जो अल्कोहलिक ग्रुप है वो कौन से नंबर के कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है, कौन से नंबर, यानी प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी की बात हो रही है. ओके. Take a small quantity of primary, secondary, and tertiary alcohols in 3 different test tubes. Using a dropper, take a small quantity of Lucas reagent. Add a few drops of the Lucas reagent into tertiary alcohol. Tertiary alcohol reacts instantaneously with Lucas reagent to form alkyl chloride, which being insoluble results in cloudiness in the solution. Take Lucas reagent using the dropper. Add a few drops of it into the secondary alcohol and keep the test tube undisturbed for 5 minutes. Secondary alcohol reacts in about 1 to 5 minutes with Lucas reagent to form alkyl chloride, which being insoluble results in cloudiness in the solution. Again, take Lucas reagent. Add a few drops of it into the primary alcohol. Using a test tube holder, take the test tube containing primary alcohol. Heat the test tube over the Bunsen burner. On warming, primary alcohols react with the Lucas reagent to form alkyl chloride, which being insoluble results in cloudiness in the solution. Test for phenolic group. Litmus test. Procedure. चलिए वीडियो के थ्रू देख लेते हैं आपका तो एल्डिहाइड कार्बन अल्कोहल्स. Tests for alcohols. Alcohols are organic compounds containing the hydroxyl functional group.
They are formed by replacing the hydrogen atom of a hydrocarbon with a OH group. Alcohols are classified as monohydric, dihydric, and trihydric depending on the number of hydroxyl groups. They are further classified as primary, secondary, and tertiary according to the hydroxyl group attached to primary, secondary, and tertiary carbon atoms, respectively. Ethyl alcohol and ethyl alcohol are the simplest alcohols. Our aim here is to identify alcohols using some simple tests. They are sodium metal test, ester test, steric ammonium nitrate test, acetyl chloride test, iodoform test, Lucas test. Sodium metal test. Materials required: organic compound, anhydrous calcium sulfate, sodium metal, test tubes, funnel, filter papers, spatula, and forceps. Procedure: take a small quantity of organic compound in a test tube. To this, add a small quantity of anhydrous calcium sulfate using a spatula. Shake the test tube well to remove any water content in the organic compound. Filter the contents into another clean, dry test tube. Now, take a small piece of sodium metal using the forceps and place it on a filter paper. Dry sodium metal by pressing it between the folds of the filter paper. Now, put the dry piece of sodium into the organic compound using the forceps. Alcohol reacts with active metals like sodium to produce effervescence due to the liberation of hydrogen gas. Ester test. Materials required: organic compound, glacial acetic acid, concentrated sulfuric acid, cold water, test tube, droppers, and water bath. Procedure: take a small quantity of organic compound in a test tube. To this, add a small quantity of glacial acetic acid using a dropper. Using another dropper, add a few drops of concentrated sulfuric acid to the test tube. Warm the mixture in a water bath for a few minutes. Now, pour the mixture into about 20 milliliters of cold water taken in a beaker and smell it by wafting. Alcohol reacts with carboxylic acid in the presence of concentrated sulfuric acid to form a fruity smelling compound called esters. Steric ammonium nitrate test. Materials required: organic compound, steric ammonium nitrate reagent, test tube, and a dropper. Procedure: take a small quantity of steric ammonium nitrate reagent using a dropper. Add it into the test tube containing a small quantity of organic compound. Shake the test tube well. Alcohol reacts with steric ammonium nitrate to give a red coloration due to the formation of alkoxycerium 4 complex. Acetyl chloride test. Materials required: organic compound, anhydrous calcium sulfate, acetyl chloride, ammonium hydroxide, test tubes, dropper, spatula, funnel, filter paper, and glass rod. Procedure: take a small quantity of organic compound in a test tube. To this, add a small quantity of anhydrous calcium sulfate using the spatula. Shake the test tube well to remove any water content in the organic compound. Filter the contents into another clean, dry test tube. Using a dropper, add a small quantity of acetyl chloride into the compound. Shake the test tube well. Alcohol reacts with acetyl chloride to give hydrogen chloride gas. Now, dip the glass rod in ammonium hydroxide solution and bring it over the mouth of the test tube. The hydrogen chloride reacts with ammonium hydroxide to form white fumes of ammonium chloride. Iodoform test. Materials required: organic compound,
1% iodine solution, dilute sodium hydroxide, test tube, droppers, and water bath. Procedure. Take a small quantity of organic compound in a test tube. To this, add a small quantity of 1% iodine solution using a dropper. Then, add dilute sodium hydroxide dropwise until the brown color of iodine is discharged. Warm the mixture gently on a water bath. When alcohol containing CH3CHOH group is warmed with sodium hydroxide solution and iodine, a yellow precipitate of iodoform is formed. Lucas test. Materials required: primary, secondary, and tertiary alcohols, Lucas reagent. चलिए, तो आज के सेशन में हमने अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप के टेस्ट यहाँ पर देखे। जितने भी टेस्ट आप लोगों ने देखे, इनको इसी प्रोसीजर से आप लोग अपनी लैब में भी फॉलो करेंगे। जो भी आपका रिजल्ट आएगा वो आप लोग बताएंगे। देन आने वाले सेशन में हम आगे फिनोलिक ग्रुप के टेस्ट लगाएंगे और उनके बारे में पढ़ेंगे। बाकी आपका कोई डाउट होगा, क्वेश्चन होगा तो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे। और तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए